Welcome students. So in this video lecture we will understand how to solve two types of um, exam questions based on text file. I am reading here first question. Write a method or function big words in Python to read contents from a text file code.txt to count and display the occurrence of those words which are having 5 or more alphabets. For example, if the content of the file is, it is given here, me and my friends ensure safety and security of everyone. The method or function should display count of big words is 5. So this is the question. Here in the previous questions we were not specified about the file name, function name, but here we have specified our function should be big words. So we need only to write the big word function. We need not to create any file. We need not to write a driver code for running this function. Simply in the board exam we will have to write only the definition of these big words, which will connect my file handle with code.txt and read the whole file, split the file into words, and then we will compare each word whether it is having 5 or more alphabets or not. Let's do it practically. I am starting ideally. And in this I am going to script mode. Here I am writing the definition. The name of the function is big words. Big words. Now I am taking one file object for connecting. I am using open method, open function. Here I am writing the name of the file, which is also given in my question, which is code.txt. So returning here code.txt, and default mode is read. So I can leave it or I can specify R. Now I am reading the whole file into data. Data is equals to f dot read. The read function reads the whole file content and it will return into the into text format into data. So now I have to work on each word, so I will split this data into words. So I am taking another variable which is a list words is equals to data dot split. Split function will break each break a whole paragraph or a whole string into words based on the separator space. अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वर्ड्स एक लिस्ट बन गई है और तो हमको हर एक वर्ड को विजिट करना है और चेक करना है उसकी लेंथ कितनी है. इसके लिए हमको फॉर लूप लगाना है. फॉर w इन वर्ड्स, ये इसी तरीके से लिखा है जैसे हम लिखते हैं फॉर i इन
कोई भी लिस्ट है तो यहाँ वर्ड्स एक लिस्ट है, तो W में एक एक लिस्ट के मेंबर आएगा जो कि हर एक वर्ड है वहाँ उसके अंदर। अब इसको हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए स्ट्रिंग की लेंथ फंक्शन होती है हमारे पास len, एंड लेंथ ऑफ W इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5। 5 और मोर लेंथ का वर्ड हमको काउंट करना है। काउंट करने के लिए हमने वेरिएबल नहीं लिया है, तो आई एम टेकिंग हियर वन वेरिएबल cnt is equals to 0, initialized cnt with 0, and after uh, getting those words which having more than 5 or more letters, I will increase my count by 1. By this way I am counting the whole words which are having more than 5 characters, and finally I can print cnt and specify a message. Since it is given in the example, you should use same language. Count of big words is. So I am adding this text also there in the print statement. Here I am writing count of big words is cnt. This is enough for our board answer, but for running it practically I have to add two things. One, I have to add a driver code in which I will call this big words function, and I must have code.txt. It should exist in my memory where my Python module is working. So I have to create this code.txt to show you whether this code is working practically or not. So I am writing here big words now. Save this simply, save with some name file big word, save. And now I will create one file using Notepad. My Python module is appdata32. This is my path where my Python module is working. Here I am creating a new file, new text file, code.txt. As you can see, code.txt is my file, so I have given the name code.txt, and in this file I will write the same paragraph, which is me and my friends ensure safety and security of everyone. I am writing here me and my friends ensure safety and security of
save this. Now run. Code.txt. Let's check. Actually, it is by default it is adding txt, so we'll remove here from txt. Now you can run. See, count of big words is 5. So this is the first question of today this video, and the second question is write a method of function big lines in Python to read lines from a text file content.txt and display those lines which are bigger than 20 characters. So here the file is given, and those lines are displayed in the output which are having more than 20 characters. So this can be done in the similar way, but instead of using read function, you have to use read lines function, because you want to check the length of each line. If you will use read function, it will read a whole file, and you will not separate. You cannot separate into lines. So it will be better use read lines. This is the change you have to do here, and since we have read lines and it is a list, you do not split up it into words, or because we don't want to split into words. So this you have to remove this. All other things will work similar. Here length, you can length is given 20, so you can compare instead of 5, you can compare with 20. So I am doing these changes in here. First of all, I am save as big word. Instead of big word, I am giving name big line. Save. Now you can specify the नाम जो आपको दिया हुआ है. पहले तो फंक्शन का नाम बदलना है, आपको बिग लाइन्स करना है, और फाइल का नाम content.txt करना है. तो मैं इसको चेंज करता हूँ. फंक्शन का नेम क्या है? बिग लाइन. तो मैं इसको बिग लाइन कर दूं, और इसका नाम करना है मुझे content.txt, और रीड की जगह मुझे करना है रीड लाइंस, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है. इसका नाम आप रिलेवेंट रख सकते हैं. आप लिख सकते हैं लाइंस. लाइंस एक लिस्ट रहेगी, क्योंकि रीड लाइंस लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें हर एक लाइन एज अ मेंबर स्टोर हो जाएगी. अब फॉर ईच एल इन लाइंस, if length of L is greater than or equals to 20, count, increase the count, and count of big lines, instead of showing the count, here they are displaying the line itself, so you need not to count that. Simply remove this line, need not to count.
simply display that. Print किसमें है लाइन? L में है, तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं L को, और यहाँ पर हम क्या करेंगे? बिग लाइन करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास ये content.txt फाइल नहीं है, तो आई हैव टू क्रिएट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस न्यू टेक्स्ट फाइल content, and in content we have to write something. Stay positive and happy, ये सब आपको लिखना है इसमें। तो ये इसकी जगह हम कुछ और भी लिख सकते हैं, हमको चेक कर रहे हैं, क्योंकि स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी, God bless you, we together can cope up with this very difficult time. Use your time properly and systematically. Let's save this. And run this code. सभी लाइन दिखा रहा है, सब में 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हैं क्या? 4 + 1 5, 3 + 3 6 + 2 8, 5 + 8 13 14 15 16 17, सभी में 20 कैरेक्टर से ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए सारी लाइंस को डिस्प्ले कर रहा है। हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसको 40 कर देते हैं और इसको रन करके देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन नहीं है, अब दोनों लाइन दिख रही। तो आप समझ गए होंगे टेक्स्ट फाइल कैसे काम करती है, और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपको दिए हुए हैं इसको आपको सॉल्व करने हैं और मुझे सबमिट करना है गूगल क्लासरूम में। सभी की कॉपी में ये कोड आना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके या टेक्स्ट करके। थैंक यू।